Hello everyone, a very good morning. I hope I'm clearly audible and visible too. Good morning Dheeraj Beta, Avni, Suman, Bhavya, a very good morning. So now we'll start with a new topic, that is models and theories in geography. And we'll try and understand what these are, how they are used in geography, and basically some of the models that are mentioned in the syllabus, we have to go through it. Okay? A very good morning Vikrant Beta, Ankit, a very good morning. Rimi, a very good morning. So if you look at the syllabus, okay, population theories we already have covered. उसमें से कुछ हिस्सा हम देख चुके हैं. खुशी बेटा, a very good morning. K, a very good morning. So now we'll look at the models, theories and laws. Laws पे वैसे हमारे syllabus का focus ज़्यादा है नहीं. So that is not that important. Models and theories, yeah, of course they are very important. And you need to know कि what exactly they are. K beta, good morning. Mukesh beta, खुश रहिए. All fine, that's great. Prabjot beta, a very good morning. So this is one of the important topics, and you'll see that the things that are mentioned in this chapter, they are quite often asked. अगर सबसे ज़्यादा consistently किसी chapter से pick किया गया topics को, you'll see that this is one topic from where UPSC every year, some of the times you'll get one question, some of the times up to 4 questions have been asked from this topic. Okay, so it happens to be the most important topic, a very static topic which has practical applications. Okay, so we'll be looking at the very chapter, and like I said, population related theories that are mentioned, Malthus, Marx, okay, and other population theories we already have covered when we were dealing with the population and settlement. Okay, okay Prabjot beta. So you got to make sure that even when you head back and when you stabilize, when you stay at a single place, you'll also make your own notes. Okay, because simply looking at the lectures and not making notes will not help you much. Though the next time you see the lecture and you make your notes, it will be kind of revision for yourself. So it will help in this regard that you'll be doing it twice, but it will take a lot of time. So models, theories की अगर हम बात करते हैं, theories are simply what? If we look at theory, this is a statement. Okay, when we call something as a theory, it means that it is a statement which has universal applicability. Okay, the statement which has universal acceptability. Okay, so this is simply few statements. We are not doing anything, okay, as such which gives a pattern, but these statements whenever used, wherever used, they stay valid. ठीक है, तो these are theories which have universal acceptability. While model is the representation of the universe, an idealized representation of some phenomena, okay, which gets global acceptability. So model में क्या करते हैं हम? We represent the thing. Okay, this is something which has elements, which has certain structure, which needs certain inputs, and finally it will lead to certain output. Okay, so such things are considered as models. ठीक है? So representation of the, here it is not a statement, it is an actual representation. Representation of the universal ideal phenomena or thing that has global acceptability.
Okay, that is like climatic modeling. We have the theory says that because of the anthropogenic activities, the temperature is rising. Okay, and wherever you go, you see that the climate is changing. तो ये एक theoretical perspective है. Okay, the model is like if we do not keep in check 1.5 degrees, then the various repercussions are going to be there. Okay, and we go to certain places where the temperature has actually changed. We see that if some coastal area the temperature has changed more, then there is coastal erosion. Okay, so you give a feedback that the temperature is increased by 1.5 2.5 degrees Celsius. You check the parameters of soil in the coastal area and you see there is more erosion. So practical outcomes are also visible. Okay, so model is something which is the next stage of a theory. Okay, और उससे previous theory से पहला stage क्या है? It is a hypothesis. Okay, hypothesis is something like, yeah, you give a statement which may or may not be valid. Okay, theory is like it is universal, and model is something which can be represented. Now law is something that gets an sanction or authority by some body. ठीक है, एक लॉ है, जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एवरीबडी एक्सेप्ट्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स मान लिया गया. Okay, that is a theory. Okay, that theory put into model, proved thousands of times correct, it becomes a law. Okay, so that is law, but our concern is not much about law. We are going to discuss mostly models and theories, क्योंकि syllabus में topic का नाम laws भी दिया हुआ है, but if you'll see, most of the thing that is in the syllabus is model and theory. देवेंद्र बेटा खुश रहिए. Okay, so everybody is clear with the idea at least. सभी लोग clear हैं ये है क्या? Okay, now different people, different geographers tried to define these things in different manners. So we'll be looking at it. Okay, for example, if we talk about Fielding, okay, so Fielding said that the model is a skeleton of theory. Okay, model is a skeleton of theory. तो आप जब definition, if there is a direct question or definition based question on models and theories, then you can use these people, or while explaining the certain aspects of models and theories, you can use that. Because historically, if you look at the old question papers, most of the times they never have asked about write a short note on model and theories, something like that, or analysis of models and theories. But in past, they have asked one question of 60 marks. Okay, and if UPSC has done that, it means that it can do it again. कोई भी चीज उसने पास्ट में पूछा हुआ है, तो आज के टफेस्ट क्वेश्चन कौन है? जो पास्ट में यूपीएससी पूछ चुकी है वो दोबारा पूछती है. इट वाज अ रेयर क्वेश्चन एंड पीपल आर लाइक इस साल का टफेस्ट पेपर आ गया. ओके, एंड दिस इज द रीजन दैट आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द मॉडल्स एंड थ्योरीज व्हिच यूजुअली वी अवॉइड. इवन टीचर्स अवॉइड, स्टूडेंट्स तो जितना कम मिले अच्छा है. अभी सुबह भी एक बच्चे ने पूछा ही था कि इतने सारे लेक्चर क्यों हैं. ओके, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ. इट विल टेक सम टाइम, बट यू नेवर नो. ये टफेस्ट क्वेश्चन जो अचानक फिर से उड़ेगा वो यही होगा, तो क्या करेंगे? ओके, सो राइट डाउन. फील्डिंग हैज मेंशन्ड, okay, many books use this ANG as well, Fielding. Okay, but we'll use Fielding. तो दोनों ही स्पेलिंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यूज कर सकते हैं. Fielding has mentioned in his book Geography as a Social Science. Fielding has mentioned in his book Geography as a Social Science that models are the skeletons of theory. Models
are the skeletons of theory. Models are the skeletons of theory. Okay. So he defined in his book that models are the skeletons of theory. Okay. Full stop. Talcott Parson, another person. Talcott Parson. Talcott Parson viewed that theory is the generalization of the established. Talcott Parson viewed that theory is the generalization of the established events. Generalization of the established events. While model is a representation of the established events. While model is the representation of the established events. This is something जो पहला आइडिया हमने डिस्कस किया है वो टालकट पर्सन से ही इंस्पायर्ड है. Okay. So basically if we look at the nature of theory and model, what they are doing, they are basically complementing each other. Okay. Whenever there is a theory which is proposed, when a theory is proposed, we can convert that thing into model. Okay. So theory and models basically are complementary to each other. ये इनके स्टेटमेंट से भी हमें दिख रहा है. So write this thing down. Okay. So looking at the analysis by the geographers, we can say that the theory and models complement each other. We can say that theory and models complement each other. One may derive a theory based on the model. One may derive a theory based on a model. It means model leads to a theory. One may derive a theory based on model, or vice versa. Okay, or vice versa. यानी क्या है, if you have a model, ठीक है, आपने एक ग्लास बनाया, ग्लास लिया और इसमें पाइप लगा दिया. ओके, इस पाइप पे क्या है, यू क्रिएट ए सक्शन, मुंह से पानी को खींचा, पानी भर के. ओके, यू क्रिएट ए मॉडल. आपने थ्योरी वेरी नहीं किया, बचपन में क्या, एक डब्बा लिया, उसमें पाइप लगाया, मुंह से खींचा और इसमें डाल दिया. ठीक है. नाउ आफ्टर द सक्शन what is happening, ये जो पानी इसमें है, it enters here, it moves, it goes like this. So maybe a self-sustaining model where the water is rotating through the pipe and the glass that is here. You create it. फिर आप क्या कहते हैं, you say that if a water-filled jar is connected with itself with a pipe and an initial suction is created, the water will start flowing and it will move throughout in a circular fashion until and unless there are certain disturbances involved. ठीक है. तो आपने क्या किया, first you created the model and then theory, or else someone reads a theory, same चीज, पहले कि if suction is created, a glass is there, a pipe is there, this thing can happen. So theory can lead to a model or model can lead to a theory. This is what we have written. Clarity है? Okay. Sometimes initially we develop a theory and then we go to a model. Sometimes we develop a model and then we reach a theory. Okay. So now whenever we look at theory building or model building, there are certain stages involved. Okay.
So now we'll be looking at the stages of evolution of models and theories. Okay, यहाँ तक I hope everybody is clear. Stages of evolution of models and theories. The stages of evolution of models and theories. Now if you look at the stages, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? Whenever you want to think about something, let us say hypothesis भी कोई देता है, तो वो क्या कर रहा होता है? What he is doing? The first thing is observation. Until and unless you observe something, you assess something. पहले आप देखेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे. Then and then only you can start in certain direction. Okay, so the very first stage is observation and assessment. Okay, the first stage of any theory or model building is observation and the assessment. Okay, now आज की डेट पे क्या है? Observation and assessment is very easy. Okay, today what do? You have so many sophisticated instruments that you can use. Okay, satellite से क्या है? Observe कर लिया और observe करके assess कर लिया, it becomes easier, right? So observation and assessment. इसमें लिखवाने की जरूरत है कि ये बताइए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक लाइन लिख सकते हैं? ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं लिख पाएगा? Is there anyone who cannot write what is observation and assessment? Okay, so you observe something and you come up with this. If I throw a stone, you see that somebody throws a stone, there will be ripples in water if a stone is thrown in water. So this is observation and assessment. ये है. Okay, now again you'll go to different place, again you'll throw, again you'll go to different place and again you'll throw, and ripples are created. तो जब ये observation and the assessment that whenever you are throwing in a particular area, अभी पूरी दुनिया में हो रहा है कि नहीं पता है हमें, we are not aware. Okay, so when you see this thing happening, you come up with certain hypotheses. Okay, and your hypothesis is, if I'll throw a stone in water, I'll see ripples. ठीक है, अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ripples देखूंगा, और यही पत्थर उठा के आदमी को मारूंगा तो आके मुक्का मारेगा. ठीक है, so certain hypothesis is there. So you'll be creating a hypothesis. So next stage is hypothesis formulation. Hypothesis formulation. Okay, so we'll move to the next stage where you are making a hypothesis. Okay, it is a statement based on your observation and assessment, okay, of certain patterns and forms. So this is actually a statement based on the observation and assessment of the patterns and forms ठीक है, so it may be true, it may not be true. आपको जैसा लगा आपने एक बना दिया. Okay, now this do not have universal acceptability. आपको चाहिए क्या? Now you'll want universal acceptability. It means you need more data and you'll have to process that data in order to present to someone कि see,
wherever I go in world, wherever I go, some other river, some other water source, I throw a stone and there are ripples. It means that the third stage is the collection of the data and processing of the data. So you'll be involved with data collection and processing. Okay. This is the third stage. Different data collection methods will be involved and you'll collect the data. Okay. You can use some statistical method, mathematical method. You can go door to door and you will collect the data and you'll try to process it, ki how much part of it is useful for my analysis, what part is not useful for my analysis. Okay, so that is there. अब आप क्या करेंगे इसमें भी, write a statement on your own. Okay, कि how using different methodologies data will be collected. It may be processed unique using statistical and mathematical methodologies. Okay, now you have processed form of data, and based on this data, now you'll try to validate the very hypothesis that you have presented. आप क्या करने वाले हैं? You'll try to test your hypothesis with the help of the data in every condition. तो fourth stage है testing of the hypothesis. Okay, so you'll go and test the very hypothesis that is there. Okay, there is something. अब इसमें टेस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे? Data you have processed. Now you'll use some of the methodologies like correlation, regression, mean mode median. Okay, those kind of things. Multivariate analysis. Okay, कि हर जगह हर टाइप का पत्थर है कि नहीं. ठीक है, अभी जो वहां पत्थर था उसी से रिपल्स हो रहे हैं. प्लास्टिक की बॉल उठा के मारा कि तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो यू यूज correlations, regression. You may go for multivariate analysis. Okay, and doing all such things, using all such methods, you are testing your hypothesis. Okay, based on the data that you have processed. ठीक है, सही डेटा लेके आपने क्या है कि इन मेथड्स को यूज किया, एंड व्हेन you get a detailed information after the testing, now you have all the data, you have received everything that is there. You do this thing, you get a ripple. You do this thing, you get a ripple in every type of condition, with every type of stone, every shape of stone, everything. Okay, now you are ready for the establishment of the theory. Okay, you'll try to establish the theory. So next stage is establishing the theory. Okay, you have checked your hypothesis, you have tested your hypothesis, and now you are ready to establish the theory. Okay, so when it is perfectly established, आप क्या करेंगे? You'll try to show this thing to everyone. Okay, if you go to some people who are like doing similar work, who are interested in the similar work, you show that this hypothesis that I have proposed, I have tested here, you can also test and you can do it. Okay, and if most of the people, okay, see that in most of the occurrences whatever your hypothesis testing suggests is true, it will be accepted as a theory, else it will be rejected. अगर यहाँ reject हो जाता है, okay, if it fails to establish itself here, it means that you'll have to
start with the process again. You'll have to bring a new hypothesis. So this is a stage, okay? If applicability is proved, if proved, theory is accepted. If not proved, the theory is rejected. Okay, the hypothesis is rejected. Okay, and if the hypothesis is rejected, again you have to go back to observation and assessment. If you want to propose a theory, अगर आपको करना है, okay, and if this theory is accepted, then you go to the next stage, that is model formation stage. Okay, this is our sixth stage. When theory is established, it is accepted, universal applicability is okay there. तो ये applicability क्या है? Universal होनी चाहिए. Universal applicability is there, okay, which is proved, which is accepted by most of the people. अब ये 100% वाला कभी नहीं होता है. Okay, you have to understand that it is not 100%. When we talk about the social sciences, you cannot establish everything. ये physics तो है नहीं. Okay, so now if it is less than 50% acceptability, तो usually हम reject कर देते हैं. Okay, so in social sciences, universal applicability doesn't mean 100%. ये दिमाग में याद रखेंगे. Okay, in social sciences, it cannot be 100%. Okay, the concept used is mostly applicable. Okay, so you have to remember this thing as well. Most का मतलब क्या है? If 100 people are there, 51 are most. Okay, so this is not like कि 90% होगा तभी मानेंगे. Most is like what? 3 people are there, 2, 1. तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है कि 2 गुना लोग मान रहे हैं. बट इफ 100 पीपल आर देयर, 51 से कि हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है. सो मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है सोशल साइंसेज में, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, समबडी विल ब्रिंग ए प्रॉब्लम, रियल और अनरियल, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज लाइक व्हाट. इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट ए बिहेवियर, बिहेवियरल मॉडल्स हमने जैसा पढ़ा, ओके, इन बिहेवियरलिज्म यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ए बिहेवियर, राइट. ओके, no human can be predicted. 100% accuracy हो ही नहीं सकती है. Okay, so but mostly if it is accepted, we'll move to the model formation stage. That is the model formation stage. Okay, and now you know the definition of model. तो यहाँ क्या करेंगे हम? What do you think? What we'll be doing with models? You'll try to create a platform. कंप्यूटर पे क्या करते हैं आप? Okay, you play a game. ये बटन दबाएंगे तो गोली चलेगा, ये दोनों बटन दबा देंगे तो बम फेंक देगा. Okay, so now you are trying to create a representation of a theory. Okay, and you can do it in different forms, different platforms. Okay, so theory is being represented.
represented in different forms and platforms. So every model and theory that you have seen, you have read, okay, वो इस स्टेज से जाते हैं. हाँ भव्या बेटा, क्रिटिसिज्म तो होना ही है. ओके, नाउ आप क्या कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग. ओके, यू कैन यूज मैथमेटिक्स में भी. यू विल ट्राई टू मेक ए मैप. ठीक है, ज्योग्राफी है तो मैपिंग में बी इवॉल्व. ओके, model formation through mapping will show that this happens. Okay, or you can go for some geometric model. डिजाइन बना सकते हैं आप जिससे आप शो कर सकते हैं. ओके, or you can choose for some non geometric model where no mathematics is involved. non geometric model. Okay, so मॉडल जो है वो डिफरेंट टाइप से आप करने वाले हैं. ओके, नाउ यू हैव क्रिएटेड ए थ्योरी एंड यू हैव क्रिएटेड ए मॉडल बाय इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द आइडियाज. ठीक है, ज्योमेट्रिक है तो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल हमने पढ़ा था. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट हेक्सागोनल मॉडल. तो क्या है, कुछ लोग क्या है गोल गोल वाला मॉडल बना रहे हैं, कुछ लोग क्या है कि कुछ भी बना रहे हैं. ओके, सो सम ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के आप दिखाना चाहते हैं कि इट वर्क्स. ओके, इफ यू कंसीडर दिस सेंटर, दिस. ओके, मैपिंग, यू क्रिएट ए मैप की स्ट्रीट्स है. ओके, एंड देयर आर हाउसेस. इफ वाटर कम्स, फ्लडिंग हो रहा है तो फ्लड अंदर पानी चला जा रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ द मैप, वाटर मूवमेंट मैप, ओके, जेंडर मैप, children's map, different type of where they play, where they go, any type of representation, any type of form, any type of platform which helps to form a model. जहां आप कुछ input देते हैं, you're providing an input and now you have output. Okay, now all the testing and everything was being done. Okay, जो पहले हमने theory को establishment of the theory, it was done at a very small scale. Okay, when you are establishing a theory and you are making a model based on that, आप क्या कर रहे थे? You were using some mathematical correlation, regression, तो बहुत ही small area में. Now this thing has to be done at a larger scale, different labs. ठीक है, कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाया, send that program to India, to Africa, to Russia and check it. Okay, or directly go to the field, cover a larger area and test the model. The last stage is testability of the theories and models under lab conditions and field. Okay, तो इस स्टेज के बाद आप क्या करने वाले हैं? हाँ धीरज बेटा, so that is the thing. Testability of the theories and models is the last stage. Of the theories and models. Simple है. Okay, beyond small labs, beyond individual efforts, beyond small groups. Okay, and you use that thing. Okay, so test the model in lab, test the model in field, okay, so practically आप उसको टेस्ट करते हैं if it is giving the outcomes correct or not. Okay,
Now, if both the lab condition and the field condition, okay, now it can result into two things. Okay, the first one is difference in outcomes. Between lab and field. बार बार टेस्टिंग होगी, बिकॉज थ्योरी इज कन्वर्टेड इनटू मॉडल. थ्योरी वर्क कर गई, मॉडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आपको चेक करना होगा. ओके, सेम आइडियल आउटकम in lab and field. Okay, if this thing is happening, again go back to observation and assessment. Because theory भी इसलिए गड़बड़, वो भले ही प्रूव हो लेकिन you are missing something. Okay, so you'll go back to that stage, and if this is valid, आपको ऐसा हो जाता है, okay, then it means that this theory gets recognition, same ideal outcome, the model and theory gets recognition. So all the theories that you read, okay, at certain point in time, they have got recognition based on the things that we have read. Okay, so you can get a small question on this thing. Okay, so these are the stages for theory and model formulation, and these are universal. Any social sciences, this is done. But if you look at geography, there are various different types of theories and models. Okay, but geography basically recognizes 4 types only. ठीक है, जितने भी models and theories हैं geography में, all the theories and models that are in geography, they can be grouped under 4 categories. Okay, there are many different ways, but as a subject matter of geography, we are not concerned with other methodologies. Okay, we are simply concerned with 4 methodologies, जिसका थोड़ा brief मैं दूंगा, and then we'll move to the systems analysis. सीधे models को देखना start करेंगे, theories को देखना start करेंगे. Okay, so the present day models, geographical models. Theories that convert into models. Okay, so a brief background that will help you to answer a question. If there is a direct question on theories and models, क्योंकि आप देखेंगे 60 mark question was there, write a note on the theories and models in geography. तो उसमें क्या अपने मन का 4 थ्योरी लिख के आ जाते हैं, जिसने किया होगा वो उस साल सेलेक्ट नहीं हुए होंगे. In recent times they are not asking, but when you are supposed to write a note on theories and models in geography, then you have to how theory is formulated, what are the different theories, the kinds, इस पे लिखना होगा. Okay, you cannot go on with the theories that, though you can use all of them, but you cannot simply put that thing without discussing this aspect. Okay, now 4 types I said. It can be analytical theory, or normative, theory. So different type of theories, though any theory can be utilized anywhere, लेकिन primary purpose सबका
यूटिलाइजेशन सबका थोड़ा बहुत डिफाइंड है, ओके, कि वेयर दे विल बी यूज्ड, ओके. साइंटिफिक थ्योरी, and metaphysical theory. This part is visible, right? Metaphysical theory. Okay. So these are the four types. अगर हम analytical theory की बात कर सकते हैं, okay. So these are all which are based on the laws of mathematics, okay, basically statistical mathematical models. So most of the time, like I said, anything can be used anywhere, but most of the times we use analytical theories in physical geography. It is easy to create models for physical geography, ठीक है, क्योंकि वहां साइंस ही जैसा है वो. Geomorphology you have read, climatology you have read. So mathematical calculation and mathematical data is required. So analytical, mostly it is used for physical geography, though it can be utilized in human geography as well. ठीक है, एक में यूज हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, okay. But mostly we see that the analytical theory, okay, where mathematical principles and laws are used, okay. They are the theories where mathematical principles are used. Principles, methods, calculations are used, okay. Now mostly, now again I am writing mostly, ठीक है, ये word बहुत important होता है. All and most में बहुत अंतर है, okay. So mostly used in the physical geography. Top usage अगर देखा जाए तो this is physical geography where it is implemented, though it can be used anywhere, like I said, ठीक है. So 3D computerized model and everything that you know, ठीक है. Physical geography में पहाड़ कैसा होगा, उसके अंदर कैसा होगा, बाहर क्या होगा, आइसोस्टेसी जमीन के अंदर क्या होगा. So this is basically like 3D models and everything that are being created. Usually we use the analytical models to come up with them, okay. तो 3D modeling जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपको समझना है कि that is a analytical model. इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, any बच्चा having any trouble, किसी को कोई दिक्कत? Okay. Now when we look at the analytical models, okay, you see this mathematical word लिखते ही क्या हो रहा है? You know that this is rigid, okay. So not suitable for human geography, suitable for human geography, though many of the people tried. हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें ट्राई किया हुआ है, okay. तो no models and no theories on analytical method, ऐसा हम नहीं कह सकते, okay. But this is not suitable because it is very rigid, ठीक है. अभी क्या है, 4 लोगों को भेजेंगे तो उनके 2 couples को एक जगह सेटल करेंगे, they'll have 4 kids, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है. But you go after 5 years, you see that there are only 2 children. Some other same type of couple you sent, you go after 5 years, each one of them had quadruples, 8 बच्चे हो गए, ठीक है, 4-4 बच्चे एक बार में. तो human is like not only the emotions are involved, but the biological conditions are also involved. So modeling is not that easy, okay, कि इतना ही population बढ़ेगा, इतना ही कम होगा. You cannot do that, okay. So everybody is clear how analytical theory is working? Now normative theory, this is mostly used for social geography, okay. Certain observations are made, okay.
based on the observation, based on the behavior of the people. Okay, the things that you see, based on that you are coming up with a theory. तो ये मोस्टली क्या है, सोशल ज्योग्राफी में यूज होते हैं. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर. तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए. The normative theory includes the human behavior, human behavior, and recognizes that in human geography there cannot be any static theory, and recognizes that in human geography there cannot be any static theory. Recognizes that in human geography there cannot be any static theory. Okay, the basic material for the theory formulation, is collected from the society. Okay, normative is our value, love, emotion, सब कुछ. Okay, so the basic material is collected from this normative society. Okay, value based society, from the normative society. Okay, but problem क्या है, when you are using the normative things, this is the most difficult to formulate a model or theory. ठीक है, दो behavioral models became very popular. हम जानते हैं कि behavioral models बने थे. All the behavioral models that you have read, they more or less fit in the normative theory, but the theory formulation is difficult. Okay, plus they may not always yield the same kind of result in all the situations. Okay, and all the things. हमने फाइनली क्या देखा, लोकेशनल एनालिसिस एंड मूवमेंट ज्योग्राफी तक लिमिटेड हो गया. ठीक है, बिहेवियर वाला थ्योरी. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट to establish such theories. And hence making a model, is bigger challenge. Okay, but behavioral model, we have seen that it has achieved. Okay, we see that in locational analysis plus movement, migration, the patterns of movement of people, it helps most successfully ये रहा है इस फील्ड में. Okay, so again you can see जो पढ़ा हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं. Okay, now scientific, already established scientific principles पे बना हुआ. Okay, any scientifically established basis is taken in the scientific theory. For example, अब scientific theory का मतलब laws of physics ही use होगा ऐसा नहीं है. For example, you know that if wherever there is a big city or very big mall where a lot of people are going, if you'll go nearby, अगर आप नज़दीक जाते हैं and you try to buy something, it will be costly. Okay, if you try to buy the land nearby a big, at the center of the city, it will always be very costly. But when you move outside, you start moving outside, तो क्या है, रेट कम होने लगते हैं. And this is why, because demand driven. Okay, scientific reasoning is involved that if there is more demand, there will be more cost. The principle of scarcity. ठीक है, कोई भी चीज स्कैर्स है तो वो महंगी हो जाएगी. So that kind of approach, okay, is involved here. Okay, everybody is clear?
So these are the theories based on sound scientific principles. These are the theories based on sound scientific principles. And this is very popular today in modern geography. And this is very popular today. In modern geography. Okay. And all the things that you read, ठीक है, जितनी भी आपने पढ़ी है, as we go away at a distance from the major center, the cost will increase. Okay. This you'll, हमने जो theories पढ़ी है उसमें पहले भी आप देख चुके हैं कि that principle was used. So the first person who used such a principle was John Buss. Okay. He proposed that principle, distance decay principle, for the developing countries. Okay, he considered that the distance decay model is valid in developing countries. ठीक है, सबका एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, तो सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. डिस्टेंस डिके मॉडल. ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि this is the work of the very famous geographers that we study about, but this was a work which was done by John Buss. Okay, distance decay model by John Buss. यहाँ एग्जाम्पल में कोई बिहेवियरल मॉडल डालेंगे. ओके, मैथमेटिकल मॉडल्स तो बहुत सारे हैं. क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एनालिटिकल थ्योरी वाले में आ जाएगा, बिहेवियरल वाला. साइंटिफिक थ्योरी डिस्टेंस डिके मॉडल, आगे जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें ये प्रिंसिपल यूज होगा. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट ही सेड, दैट इफ यू गो अवे फ्रॉम द सीबीडी, ओके, लेट अस से कि सीबीडी यहाँ पे है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. द मोर यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर, व्हाट विल सी, द कॉस्ट विल डिक्लाइन. ओके, तो दिस मॉडल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से आप जितनी दूर जाएंगे, कॉस्ट विल चेंज. सो दिस इज ए सिंपलिस्टिक मॉडल दैट ही हैड गिवन. ही कॉल्ड इट एज डिस्टेंस डिके मॉडल. ये नीचे जो मैंने बनाया है ये ऐसा है डायग्राम, फिर दिख नहीं रहा है. दिस इज सीबीडी. ओके, इससे मैंने एक लाइन खींची है और ये ऐसा ऐसा. ओके, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो X, Y. Okay, he gave a simplistic model, John Buss. Okay, distance decay model. तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए. Just giving you certain. ठीक है, इन दोनों का तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है पर्सपेक्टिव में. So write down. John Buss developed a model for developing countries. John Buss developed a model for the developing countries, which is called as the distance decay model, which is called as a distance decay model. Okay, it relies on the principle, that if the distance increases from the city center, it relies on the principle that if the distance increases from the city center, people's pressure begins to decrease. People's pressure starts to decline from the city center. Okay, so this is the
type of theory. Okay, present day geographical theories इस तरह से बनती है. Okay, now last one is metaphysical theory, and this is rarely used. ठीक है, this is rarely formalized by the geographers. ये आपको जानना है, but still it is used. Rarely formalized by the geographers. क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं. Okay, geography always struggled to establish it as a scientific discipline, and if somebody tries to establish it as concept, something which is metaphysical, it can be very difficult. Okay, so if we look at the things which cannot be explained, okay, we want to understand the past, but many of the things cannot be explained. So anthropogeography जो है, humans influence geography, इसमें ये metaphysical वाला use होता है. Okay, so this is used in anthropogeography. Okay, and we have seen that this same thing was used by the physical geographers as well. ठीक है, अब समझ नहीं पाए कि how plates are moving, how everything is happening, तो many of the people said कि biblical flood ने किया है. How people started evolving, तो biblical flood ने किया है. Okay, so the Christian beliefs, they used that thing in the past. Okay, तो ऐसा नहीं है कि ये use नहीं किया गया है. Okay, so metaphysical models have been used in physical geography in past. Okay, so metaphysical theories were used in physical geography in past. Though it is not popular, but still some of the people use it. क्योंकि everything cannot be explained. The truth is कि आप हर चीज़ नहीं जानते हैं. The development of science, we talk about the scientific world and everything, but science actually cannot explain many of the things. And if science cannot explain many of the things, it means what? You'll have to focus on this. Okay. For example, अभी भी life क्या है? Many of the geographers believe that life has been borrowed from some outer planet. Salt in oceans, okay, still is not explained. Outside world से आया है मानते हैं. So this is something metaphysical. Any idea which tells that not everything was on earth can be grouped under the metaphysical theory. Okay, still we cannot explain how the sodium is so much in oceans. ठीक है, पत्थर वत्थर तो लेके आ ही नहीं रहे, फिर इतना सारा क्यों है? So many things that cannot be explained from the theories, okay, have been explained using metaphysical theory. Clear है everyone? यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ? Okay. So you can get a question on theory formulation, model formulation. तो theories ये है, and basically अगर हम मॉडल्स को देखते हैं, ओके, तो there are 5 types of models which are used in human geography. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर हम देखते हैं, ये तो थियोरेटिकल स्टेज है. These type of theories lead to models. Okay, so all such theories, all the methods of theory formulation, usually physical geography, different kind of models are there. Very different kind of models do exist. But if we talk about the model formation in human geography, basically there are 5 types of models which have seen more acceptability
in geography. So we'll talk about those types. ठीक है, तो इसमें से कोई भी 10 नंबर का जो टॉपिक हम देख रहे हैं, यू कैन एनी गिवन डे यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो 7 स्टेजेस तो हमने देखे थे जो शुरू में. अगर मॉडल फॉर्मेशन पे आता है तो जो फर्स्ट 7 स्टेजेस हमने देखे हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट एंड फाइनली विल कम टू द थिंग्स दैट वी आर डूइंग. ओके, सो 5 types of geographical models, okay, or geographical models for human geography. कि अगेन सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में ही है ऐसा नहीं है. ओके, दिस ह्यूमन वर्ड इज नॉट यूज्ड, अगेन यही लिख देंगे. इससे ज़्यादा लिखने का मौका एग्जाम में ऐसे भी नहीं मिलने वाला. ओके, so though I am writing that it is used in human geography, but any kind of question is there, यही पांचों लिख दीजिए, you'll get marks, because most of the people will not be able to write. क्योंकि वो सीधे क्या है, most of the people are like what, सिलेबस में ये लिखा है यही पढ़ो, और बाद में फिर कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया. सिलेबस के बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें हैं, उससे भी आता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस इज वेरी पॉपुलर. ओके, एवरीबडी इज लाइक आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है. नो क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस. यूपीएससी हैज नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन विच इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक. अभी हर एक माइक्रो टॉपिक कैसे लिख के देगा कोई सिलेबस में, फिर तो आंसर ही दे दे आपको. ओके, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज मूवमेंट मॉडल. Okay, the first type of model is movement model. इसी को आप क्या कहते हैं, स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल. ओके, यही कौन से हैं, ऑल द ग्रेविटेशनल मॉडल्स दैट यू हैव रेड. स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल आपने जो पढ़ लिया है, ग्रेविटेशनल मॉडल. लॉ ऑफ रिटेल ट्रेड ग्रेविटेशन पढ़ा था. ओके, सो व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, सम ऑफ द पीपल कहाँ तक कितना रेंज है, कहाँ जाएंगे. ओके, सो सिटी रीजन में जितने भी मॉडल पढ़े हैं आपने, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिटीज, वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर in this movement model. Okay, now next type of model is called as network model. So all the models, okay, which leads to certain prediction. ओके, दैट इस रास्ते से जाएंगे तो ऐसे मुड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जो हम आज ही पढ़ेंगे, लाइक सिस्टम्स एनालिसिस. ओके, पाइप से पानी जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा राइट मुड़ेगा, ट्रैफिक जा रही है दाहिने मुड़ेगी राइट मुड़ेगी, ऑल दोज काइंड ऑफ मॉडल्स. ओके, वेयर सर्टेन प्रिडिक्शन कैन बी मेड. ओके, दे यूज नेटवर्क मॉडल्स बिकॉज यू कैन कनेक्ट द नोड्स. ठीक है, तो इसी में क्या है, नोड्स मॉडल भी है. ये क्या है, लुकिंग एट द नेटवर्क विच कनेक्ट्स द नोड्स, और व्हेन वी फोकस मोर ऑन द नोड्स, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस दीज आर जो कनेक्टेड है, वी कॉल इट एज नोड मॉडल. ओके, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब हम क्या नेटवर्क पे फोकस करते हैं, कनेक्शंस पे फोकस करते हैं, वी कॉल इट एज नेटवर्क मॉडल. और जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, इट इज कॉल्ड एज नोड मॉडल. ओके, सो इफ वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन द सिटी, अभी हम सिटी वाला हमने कवर कर लिया. नाउ नेटवर्क मॉडल इज लाइक व्हाट, दैट two cities are connected by a national highway and
on both the sides urbanization starts, people start coming and settle down. That is network model. We can predict that if two cities are connected by the national highway, then some of the settlements will start happening around both the sides of the road. Now if you are focusing on the city, one city is bigger than the smaller, hierarchy, rank size rule type ka. One is big, one is small. We are focusing on the nodes. It becomes the node model. Okay. So write in the network model. The network model is also called as the simulation model or simulation model. The network model is also called as the simulation model. They are usually predictive models. They are usually predictive models. They are usually predictive models based on certain observed forms and patterns. 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 ठीक है, अभी रीजनल प्लानिंग को देख लीजिए. ऑल द रीजनल प्लानिंग दे यूज दीज मॉडल्स, पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, इस रीजन में स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे तो डेवलपमेंट ऐसे ऐसे होगा. वी आर मेकिंग ए प्रिडिक्शन. ओके, स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो ये फायदे होंगे. वी आर मेकिंग ए पैटर्न. सो बेसिकली ऑल द स्मार्ट सिटीज, all the planning that is happening in any of the regions, that is mostly based on the network or simulation model. Okay, because we can predict the thing. Okay, simulation models, prediction, climate change के ऊपर हम बनवा रहे हैं. सिर्फ शहरों को जोड़ा गया या नहीं है. There are elements. Okay, the rabbit is connected with the grass. Grass नहीं है, rabbit खत्म. Okay, so prediction is happening. So all those kind of things can be used in network modeling. Okay, so you write down. This has a great usage. This model has a great usage. This model has a great usage in the regional planning. This type of modeling, this modeling, this type of modeling has a great usage in the regional planning. This type of modeling has a great usage in the regional planning. It's a great usage in the regional planning process. Okay. Now nodal model की बात करते हैं तो more importance is given to the node. Okay, here more importance or more focus is on the node, given to the node. If you are solely focusing on a single center, तो every urban land use model, जो भी आप पैटर्न्स बनाते हैं, शहर कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लैंड, ठीक है, ये हॉस्पिटल है तो इसका रोल क्या है, स्कूल है तो इसका रोल क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है तो इसका रोल क्या है. ओके, सो द लैंड यूज प्लान इन एवरी सिटी फोकसेस ऑन ईच नोड कि यहीं पे ये प्लेग्राउंड क्यों चाहिए, यहीं पे पार्क क्यों चाहिए, यहीं पे बस स्टेशन क्यों चाहिए. ओके, सो राइट डाउन nodal model. All the urban land use models, all the urban land use models focus on this type of modeling. Focus on this type of modeling. Focus on this type of modeling.
focus on this type of modeling. Okay. Now, hierarchical models. Okay, big city, small city, those kind of things. This comes under the hierarchical models. Okay. So this is very simple. Hierarchy के बारे में हमने काफी देखा है, and in this chapter only we'll talk about the central place theory, one of the most famous hierarchical models, and hexagonal pattern was used, okay, to represent the cities. So main city, okay, is at the center, smaller settlements in a hexagonal pattern. Okay, so hexagonal model. So some geometrical modeling used to define the things. Okay, so hierarchy. This is the biggest center. These are smaller settlements. Okay, how the smaller settlements are influenced by the big settlement. So central place theory. Okay, hierarchy, which recognizes that sum of everything that exists in a land area. Okay, some of the cities can be big, some of the small, how their dependence is, how the market is influencing, how the administration is influencing, and everything. So here, central place theory. Okay, Christaller's central place theory is the best example that we'll be covering in this chapter only. So इसका आप लिख लीजिए. Okay. So basically they are connected by the nodes. Hierarchy का मतलब क्या है? एक से दूसरा connected है. And this hierarchy you can see in many different aspects as well. Okay. जो आरपी मिश्रा का हमने पढ़ा था. Okay. Growth center, growth foci, everything. Okay. Growth point. You hierarchical था. You can talk about आरपी मिश्रा. तो जो आप पढ़ चुके हैं उसी की बात कर रहे हैं हम. इसमें कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं. Okay. This is one chapter that we are taking now. You have already read everything. I'm just helping you with some kind of revision, I can say. ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको एक जगह इकट्ठा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Nothing much. Okay. Now the next one is called as the surface model. Okay, man-environment relationship, the interaction between man and environment. That is surface model. Surface model. Okay. लाइट चली गई है, बोर्ड हो सकता है धोखा दे जाए, तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे. Okay. So surface model. This is the model which focuses on the man and environment interaction. Okay. All forms of different interactions that man and environment have, it focuses on that. Okay. So write down this type of modeling focuses on the interaction between the man and environment. The interaction between man and environment. Okay. अब इसमें क्या है कि if you'll go to a mountain area, you can develop tourism. Okay, वहां पे आप क्या है कि रेलवे कोच फैक्ट्री नहीं बना सकते. मैन इन्वायरमेंट रिलेशन मॉडलिंग का मतलब क्या है? व्हेन इफ यू विल ट्राई टू डेवलप ए मॉडल वेयर टू प्लेस एन इंडस्ट्री, ओके, इफ यू वांट टू create some recreational facilities, there are certain places
ठीक है, अभी मॉल के ऊपर पार्क बनाएंगे और सब पब्लिक को बुलाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते. ओके, so how the man and the environment are interacting and what is possible and what is not possible, all those kind of modelings, okay, will come under the surface model. Okay, different kind of models are there based on which what kind of economy is suitable in the coastal area, what kind of functions can be done in a coastal area and everything, those kind of models. ठीक है, डेवलपमेंट में जब भी यूज होता है sustainable development models. Okay, we use surface models. So you can write down this is one model which helps us in creating sustainable development based models. This type of modeling helps in creating sustainable development based models. Okay, और ये टाइप्स अगर किसने दिए ऐसा है तो हैगेट ने दिया था. Okay, हैगेट tried to give these models. He was the person who, okay, so all the types were given by Haggett. The types were given by Haggett. After Haggett, we have these models. So this is a general discussion. Okay. So there are a lot of models that we have to use. Different approaches are there. If there is a direct question, I'm pretty sure that you'll be able to manage this without any difficulty. यहाँ तक कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भी बच्चे को समझ में आ रहा है? Okay, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, you'll see that indirectly UPSC has asked बहुत बार. Directly there was once they wanted to know the things that we have discussed, and believe me, these are the kind of questions which suddenly appear in the exam hall, और फिर बाहर निकल के बच्चे हल्ला करते हैं कि बहुत टफ पेपर आया. and the people who write, जो अपने मन से भी लिख के आते हैं कम से कम थोड़ा आसपास, उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. Okay, because if the paper is easy, everybody is going to get less marks. ये प्रॉब्लम है, ये हमेशा याद रखिए कि अगर सबको आता है तो सभी लिख के आएंगे, फिर मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा? हाउ विल you get more marks if everybody is writing the same type of answer, same answers, everybody can attempt with ease. मार्क्स तब आते हैं जब आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो पेपर लोगों को टफ लग रहा है, बट स्टिल यू आर एबल टू मैनेज इट. और मैनेज कौन कर सकता है? दो टाइप के लोग कर सकते हैं. फर्स्ट कि रीडिंग बहुत वाइड है, ओके, और दूसरा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. ओके, तो सेकेंड टाइप अंडरस्टैंडिंग वाले हमेशा हर टाइप के पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन ओन आंसर एंड समबडी एल्सेज आंसर. Okay, Nishant beta, you have purchased some notes and those notes have not much explanation. So you are not going to get it. Of course, when somebody else, देखिए usually क्या होता है, most of the people बहुत ही कम टाइम में पढ़ाते हैं और उतना काफ़ी है. मेंस के लिए कुछ चाहिए ही नहीं. निशांत, if somebody has cleared prelims और वो अभी भी कंटेंट के पीछे भाग रहा है तो बहुत दिक्कत है. आपकी सोच में दिक्कत है, आप सही से परस्यू नहीं कर पा रहे एग्जाम को. अरे जितना कंटेंट है उतना लिख सकते हैं क्या? 15 मार्क्स में यही क्वेश्चन मैं दे दूं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडल एंड थ्योरी बिल्डिंग और थ्योरी फॉर्मुलेशन. 20 नंबर का क्वेश्चन हो, एंड द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर लास्ट 80 minutes, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन राइट एवरीथिंग? कंटेंट ये बहुत ज़्यादा है बच्चे. जो नोटबुक में दिखता है, याद करेंगे तब समझ में आएगा, जब लिख के देखेंगे तब समझ में आएगा. बैठ के ऐसा नोटबुक 100 पन्ने अरे कम है तो फिर हमेशा कम लगेगा. पढ़ना स्टार्ट कीजिए, याद रखना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना कम या ज़्यादा है.
ओके, अभी 100 का 100 चाहिए, 80 नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 20 इसमें नहीं है। सो यू आर लूजिंग 80 बिकॉज ऑफ 20। अरे बाकी का 20 देखा जाएगा, जितना है वो तो पढ़िए पहले। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास सही सोर्स नहीं है, जो है वो तो पहले पढ़ लीजिए। दीज आर ऑल some kind of excuses that we give to ourselves to not qualify। कि 5 पन्ने 5 पढ़ लीजिए फिर छठा खोजेंगे, ठीक है, पहले 5 पे कंट्रोल हो, छठा फिर खोजेंगे। लोग क्या करते हैं, 5 रखे रहते हैं कि मुझे अच्छा से छठा पेज नहीं मिला, तो क्या करेंगे छठे पेज का? वो मिलेगा नहीं, जो रखा हुआ है वो पढ़ेंगे नहीं। हाँ निशान बेटा, इफ यू हैव डन इट, revise it, and if you think that there are certain lacunas, read the current affairs। मेंस के लिए तो दुनिया कोई नोट्स किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए और पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स पढ़िए, हो गया मेंस। मुझे ये प्रीलिम्स के लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है, कम है, कोई रो रहा है, ठीक है, कोई परेशान है कि मुझे नहीं मिला। मेंस के लिए एवरी नोट इज सफिशिएंट। अगर हर टॉपिक पे 4-5 लाइन लिखा है, 4-5 लाइन करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, हो गया। द थिंग इज लाइक यू हैव गॉट टू हैव अंडरस्टैंडिंग, एंड Nishant, you said that you have cleared prelims. It means that you have certain understanding of the subject matter. And if somebody has cleared prelims, then of course you know lot more than what you can write in exam. अभी आपको सारा राइट टू इक्वलिटी पे क्वेश्चन आए, आपको सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स में याद होते हैं, आप सारी चीजें थोड़ी लिख पाएंगे क्वेश्चन में। इवन इफ देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। 14 से 18 तक लिख के देखिए, एवरी प्रोविजन 15A B C D करके लिख के देखिए, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। ओके, सो वी डोंट नीड एक्चुअली दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड यूपीएससी खुद कहती है इट लुक्स फॉर एनालिसिस। एक साल में 21 साल का बच्चा पास हो रहा है और आप लोग कंटेंट के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी सुबह एक बच्चा आया था, उसको कंटेंट नहीं चाहिए था। तो कुछ लोगों को कंटेंट चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। ओके, जब लेक्चर्स ज़्यादा हो जाए तो कंटेंट ज़्यादा है। यही लेक्चर्स नोटबुक में क्या है कि 4 ही नोटबुक है, तो अरे यार कम है। ओके, मुझे नहीं पता है अजय बेटा, अगले महीने खत्म होगा ये पता है, ठीक है, कितने दिन का मुझे नहीं पता है। अभी बीच में 5 दिन क्लास कैंसिल हो गया था। आई डोंट नो हाउ मेनी मोर डेज आई विल टेक। ओके, इस सवाल का जवाब मेरे पास कभी नहीं रहता है। कोर्स खत्म हुआ कि नहीं एक दिन चेक कर लेंगे, 1-1.5 महीने बाद। ओके, अगर कम चाहिए तो आई कीप टेलिंग दिस थिंग। ओके, आई कीप टेलिंग दिस थिंग कि मार्केट में सारा मटेरियल है, इतना नहीं मिलेगा। उसके लिए आप उनका दूसरा कोर्स वाला भी मटेरियल लीजिए, क्लास नोट्स, सम अदर कोर्सेज नोट्स, सम टेस्ट सीरीज नोट्स, सारा मिला दीजिए तो वो होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, पे कोई बात नहीं है, ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है क्लास अटेंड करिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सारे कोर्सेज करिए। ओके, बाकियों का 4 महीने का मेजर कोर्स, फिर उसका टुकड़ा कोर्स, फिर उसका टुकड़ा कोर्स, अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग दिस मच ओनली। ओके, बट ये है कि बहुत बार पैसे देके ये समझ में आता है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ योर मनी, योर टाइम, द वे यू वांट टू इन्वेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द टाइम, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन्स। अभी तक आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ऐसा है, फिर रोज कहानियां सुना रहा हूँ ऐसा है। सो वी आर डूइंग ऑल द रेलेवेंट थिंग्स। लुक एट द क्वेश्चन पेपर, ये सारे वो चीजें पढ़ रहे हैं जो सवाल पूछे गए हैं। ओके, और आपको वो नहीं चाहिए तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अजय बेटा जितना भी टाइम लगे पढ़िए, बिकॉज आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। और जब मैं ये हटाने वाला हूँगा तो मैं बताऊंगा, एंड दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं अलाउ भी कर रहा हूँ कि डाउनलोड कर लेंगे। ओके, बट जब मैं दिसंबर जनवरी में हटाऊंगा इसे, it will not be accessible, it will not be public, then I'll not complain कि somebody has downloaded, because मैं कह रहा हूँ कि डाउनलोड कर लीजिए।
लेकिन अगर मैं इसे पब्लिक स्फेयर में रखूंगा तो कुछ दिन में ये बिजली का खर्चा और स्टूडियो नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, फिर डोनेशन पे जीना होगा। okay, because this is something that I am doing for those people who are serious enough to complete the thing in the given time. Okay, and if you are not investing, बहुत सारे बच्चे आते हैं सर यूट्यूब पे प्रचार आ रहा है, अरे बेटा यूट्यूब की पॉलिसी है, सर का नहीं है। माई चैनल इज नॉट मोनेटाइज्ड, यूट्यूब को दे देंगे, मुझे पैसे नहीं दे रहे, यूट्यूब को दे देंगे। भाई कितना मांग रहा है वो, 150-200 रुपये महीने का मांग रहा है, दे दीजिए। 100 रुपये मांग रहा है शायद, उसको दे दीजिए, प्रचार नहीं आएगा, मुझे मत दीजिए। ओके, लेकिन बच्चे फिर भी ऐसा रहते हैं, वो भी नहीं देना है। ओके, तो फ्यूचर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 100 रुपये तो रोज 2-2 रुपये बचाते हैं, तब भी हो जाता है। गुल्लक रखेंगे कि यूट्यूब को देना है। तो मैं पूरा करवाऊंगा, जिसका रह जाएगा वो अपना डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। पेन ड्राइव नहीं खरीदूंगा, डाउनलोड करके कहाँ रखूंगा, तो बेटा अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ ऑलरेडी। ओके, तो जितना मैं कर सकता हूँ आई एम हेल्पिंग। ओके, दो आई नो कि आई कीप टेलिंग पीपल ए स्टोरी, ठीक है। बचपन से कहानी मुझे सुनाई गई है, जब मैं ये कर रहा था तो वो कहानी मुझे याद दिलाई गई थी। यू स्टार्ट गिविंग ए स्वीट टू योर नाइबर। छोटा बच्चा है कोई 5 साल का, उसको आप रोज एक मिठाई दीजिए, ठीक है। उसको पूरे देश में कोई मिठाई ना देता हो, आप उसको एक मिठाई रोज दीजिए फॉर 30 days। ओके, एंड सडनली 31st day stop giving that. Do not give the sweet to the child. That kid will start hating you, ठीक है। वो बच्चा आपसे नफरत करेगा कि आप टॉफी नहीं दे, पूरी दुनिया नहीं देती है। He doesn't care कि पूरी दुनिया मुझे टॉफी नहीं देती है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आदमी मुझे टॉफी नहीं दे रहा है, बिकॉज यू वर द वन हु वाज एक्चुअली गिविंग हिम द टॉफी एवरी डे। एंड नाउ आपके पास मीन्स ना हो, आप ना दे पाए, तब भी आप ही टारगेट बनेंगे, क्योंकि उसको आदत हो गई है। वो उस टॉफी को आपका गिफ्ट की जगह अपना राइट मानने लगा है। Okay, so the moment I remove the videos, I'll be hated. Everybody will scold. I know. Okay, but I don't care because I know the truth. कि जो कोई नहीं दे रहा है वो भी आप देंगे, तो वो हैबिट हो जाती है। और एक बार हैबिट का मतलब क्या है कि वो हम उसको राइट समझते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आपको मिलनी ही थी, लेकिन मिल गया। और यू मस्ट बी थैंकफुल टू सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हु सेंट, who wrote about their family conditions, okay, who were not having enough money. Okay, many of you can afford, I know, but those people could not. उनके लिए पढ़ाता हूँ मैं। और वो बच्चे अभी कैसे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो लाइव लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए मैंने स्टार्ट किया था। yes, you should be thankful for that. हाँ निशांत, you are smart. ठीक है अजय बेटा, एंड दिस इज समथिंग दैट जो मैंने बताया वो लाइफ में हमेशा याद रखिए। सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट पीपल विल हैव पॉजिटिव व्यूज अबाउट यू इवन इफ यू डू गुड थिंग्स। इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, डू इट, डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि दुख आपका क्या है, आपके एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। सो सिंपली चूज नॉट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू। ओके, दैट विल हेल्प यू टू स्टे हैप्पी। Okay, this is something that I have experienced in life. कर्म करो, फल की चिंता ना करो. That literally gives you a boost. Okay, अपना एग्जाम लिख के आओ, ठीक है। मैंने मेहनत की थी, उतने पे रहिए। रोज पन्ने पलट के इसमें कितना नंबर मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, हालत खराब हो जाती है। ओके, नाउ let us come back to the discussion, but half an hour I don't think that we'll be able to finish systems analysis in geography. तो systems analysis हम कल start करते हैं, ठीक है। we'll do it tomorrow. and जैसा मैंने कहा, perspective and theories we are doing. again now when we'll start with the systems analysis, you'll discover that dynamic questions लिखना बहुत सारे में और आसान हो गया, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अभी कुंभ मेला के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो थिंकर है कि नहीं है, ठीक है, थ्योरी है कि नहीं है। हाउ टू मैनेज कुंभ मेला अगर ज्योग्राफी में आ जाता है क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज ट्रैफिक अगर आ जाता है ज्योग्राफी में क्वेश्चन, दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट tomorrow, though I plan to start it today only, systems analysis and geography, but we'll start tomorrow after doing this thing, all the management things, ठीक है, पानी का पाइप कैसा होना चाहिए, रोड का नेटवर्क कैसा होना चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, how you can place the gardens, how we have to use the technology to make a city smart, you'll be able to write about it after reading systems analysis. Okay, सो टुमारो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, एंड बाय द टाइम वी फिनिश इट एंड इनिशियल सम डिस्कशन ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यू विल सी दैट यू हैव इनफ होल्ड ओवर द थिंकर्स, और ओवर हो जाएगा ये। ओके, आप एक ऐसी स्टेज आएगी रिवीजन के बाद जब आप 7, 8, 10 लिख सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस फेज, बट यू हैव टू रिमेंबर, जो मैं रोज फिर से आपको जब तक मॉडल्स एंड थ्योरीज पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा याद दिलाऊंगा, डू नॉट राइट मोर देन 4 थिंकर्स और व्यूज इन ए सिंगल आंसर। ओके, बिकॉज द फोकस बिकम्स मोर टुवर्ड्स दिस थिंग। ओके, देवेंद्र बेटा, this is, I keep telling you, this is not me. Okay, this is everybody given an opportunity, we just do not recognize. Okay, it is our duty to do something good for the people. Okay, और आप कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, बाकी सबको मिल रहा है, you just have to go with it, and this is for what we have been sent on this earth. ठीक है, नहीं तो ये बंदरों को भी भेजा गया, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, हम आदमी हैं। ओके, तो आप जिसमें भी बिलीव करते हो, भगवान आपको भेजा ही इसलिए कि आप कुछ अच्छा करें, कि नहीं तो अपने लिए खाना, अपने लिए पीना, अपने लिए करना तो ये सारे जानवर भी कर रहे हैं। व्हाट फॉर यू आर ह्यूमन, सो मेक श्योर दैट वॉट एवर योर कैपेसिटी इज, कि जितना आप कर पाए, खुद को बेच के करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, दैट अपने लिए कुछ मत करो, सबके लिए करो, ऐसा कुछ नहीं, बट एटलीस्ट इफ यू हैव 100 यू कैन स्पेयर 1, नॉट एवरीबडी कैन स्पेयर 50, आई नो। ओके, नो, मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट डू इट, नहीं तो मेहनत करना छोड़ देंगे लोग कि अपने लिए है ही नहीं, but at least if you have 100, try to give 1 to people who are in need. Okay, because I know that all of you who are looking at me, who can see me on this screen, you all have the privilege of having a screen. There are so many people who don't have that. Okay, so think of it a way of thanking whoever you want to. Okay, for me it is God, for you it can be anyone, but do help whenever you can. Okay, हाँ भाव्या बेटा, ये आसान है, and you'll see that you'll be able to deal with most of the topics with ease after these lectures. Human geography, like I said, आसान है, revision चाहिए होगा। Okay, at least headings, नाम तो याद रखने होंगे, movement, network, this and that. So if you can manage this much of thing, you'll see that you can score 300 plus marks. Okay, most of the people, what they do, they keep straying, they keep searching for other material. Okay, but revisions help you to discover a lot of things. मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, most of it I was able to discover with my own revisions. Okay, though I will not say कि सारा का सारा मैंने कर लिया था, but believe me, I only had a glimpse of some of the how to use thinkers. Political geography, okay, I was reading about Mackinder, if is applicable, Spikeman applicable, वो वाला काम मैंने किया था, and with revisions I started discovering that a lot more application is there, and then I used to check कि मैं सही direction में जा रहा हूँ कि नहीं. Okay, I'll search कि this can be implemented in this or not, and I'll discover कि नहीं, I'm going in right direction. So the things that I'm teaching you, you'll go beyond that. Okay, you'll be able to manage that. Just make sure that while writing the answers, you are not moving away from the question. You just have to make sure that you understand the question, address the question,
And you'll see that lot of thinkers automatically fit in if you have revised the things well. Okay. So everyone, I'll take a break. We'll stop here only. Systems analysis is going to be our next topic that will start tomorrow. And they are going to be important. ठीक है, तो make sure that you are revising the things. अब revision इतना बार कहा है मैंने. At least मैं expect करता हूँ कि those who are attending live, you are at least investing your time on revisions. That is important. ठीक है, आप 12-14 बच्चे जो रेगुलरली अटेंड करते हैं, आप भी रिवीजन कर लेंगे, तो मैं श्योर हूँ कि 14 रिजल्ट है मेरे पास. ठीक है, 14 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी IAS. हाँ बेटा धीरज. Okay, so invest your time on this thing, and you'll see that you'll improve in each and every subject matter. Okay, once you control one subject matter, your confidence level goes high. This confidence level starts reflecting in other subject matter, and this is what you have to achieve through revisions. So everyone, I'll take your leave here only. Stay healthy, stay blessed. Thank you very much.